Good morning, dear students. Am I audible to you? If yes, please type yes in the chat box. If my screen is visible, please type yes, screen. Okay, you are able to see me, but are you able to see the screen? Yes? Yes, you are able to see the screen as well. Let us begin with the presentation. So, very good morning, dear students. You are very well know me. I'm Dr. Tasneem Khan, Faculty of Engineering Chemistry for BE first semester and second semester. Today we'll be having a very brief introduction regarding the topic that is energy and environment. It is our first semester syllabi, right? Environment and engineering, or you can say energy and environment. So we'll be dealing with unit number 1, basics of energy and solid fuel. So to begin with the unit, let us first go through the course objective which is being given to us by the university. So the course objective is to impart knowledge in the domain of renewable and non-renewable source of energy, to bring out impact of energy technologies on environment, inculcate knowledge and skills about assessing the energy efficiency of different energy sources and use of advanced materials for sustainable development. The key to this unit is basically to go with the study of energy and sustainable development. We need to be very thoughtful in using the sources of energy because one day it will get extinct. So we need to be very much vigilant and thoughtful in using the energy or its resources. So the course outcome which has been prescribed by the university is as follows. The course outcome which I'm been sharing you is for all the 6 units right now. We will be studying each individual course outcome in with the respective units. So after studying the course, that is the course of energy and environment, the students will be able to obtain knowledge of solid and gaseous fuel and their calorific value determination. You will be able to recognize the type of liquid fuels and their usage in internal combustion engines. The student will be able to apply the knowledge about the use of alternative source of energy. You will be able to differentiate the types of waste and its management. You will be able to analyze the impact of industrial pollution and its control. So these are the 5. The last one is to develop innovative ideas for the use of advanced material in sustainable development. So these are the 6 course outcome which is being prescribed by university, and each outcome is being associated with units. That means we have 6 units, 6 outcomes. With the content of unit, that is the basics of energy. So what you are going to study in this unit is, we'll be going through the introduction part, the sources of energy, the types of energy, the units of energy, the thermal basis of energy, fuel, the thermal energy content of fuel, heat capacity, sensible and latent heat, evaporation,
condensation, then steam, moist air, humidity, and heat transfer. We'll be having the classification of fuel, its calorific value, the higher calorific value, the gross calorific value, determination of calorific value by Bohm and Boyce calorimeter. Solid fuel, significance of proximate and ultimate analysis. You'll be happy to hear that this unit contains numericals as well. Numericals have been based on Dulong's formula, and there are certain numericals which is being based on calorific value. In other words, we can say it is being based on Bohm and Boyce calorimeter. So when we go through this unit, which has the heading Basics of Engine Energy and Solid Fuels. It is of 11 marks and it basically covers up CO1, that is course outcome 1. And as I told you, it is been given 11 marks. So this is a pretty good unit, a good unit in which you can easily score because it contains a numerical. So after studying this unit, you, the students, will be able to obtain the knowledge of solid and gaseous fuel and their calorific value determination. How you can easily determine the calorific value. We'll be studying various types of calorimeter here. Okay, let us begin with the unit. To begin with the unit, since the name is being given, Basics of Energy and Solid Fuel. So we'll be studying about the fuels. Now, before going to the word fuel, we are very well aware from the childhood that we have studied about fuels and we have classified those on the basis of solid, liquid, and gaseous fuel. And they are being utilized or they are being available for various domestic as well as industrial purposes. So the various types of fuels which is being available is basically being used for firing in boilers, in furnaces, and for other combustion equipments. Okay. The selection of right type of fuel basically depends upon various factors such as availability, storage, handling, pollution, and landed cost of the fuel. So these are the few factors which basically are being responsible for finding out the type of a fuel for a particular. So the knowledge of the fuel property basically helps us in selecting what is the right kind of a fuel for a specific purpose, and we'll see to it the fuel which is being used here is being used or it is being exploited to its maximum, because the fuel which we have been studying here is nothing but the fossil fuels, and we are very well aware that fossil fuel is going to get extinct, right? It has not been prepared in a day or so. It took millions of years for the preparation or for the accumulation of fossil fuel in the earth crust. Okay, so we need to select the fuel for a very right purpose, and the right type of fuel should be used. For example, if I wanted to make a cup of tea, I can use any three forms of the fuel like solid, liquid, or gaseous fuel. Yes, gaseous in the form of LPG, I can make tea with it. Solid, yes, if I have coal or if I have you can say wood, I can use it, right? I can also use liquid, that is kerosene, for the preparation of tea. But if I wanted to run a scooter, I cannot use gaseous fuel, I cannot use solid fuel. I need to go for a liquid fuel. So we need to select the right fuel for the right purpose. And before that, we should know about its factors or various properties, that is the availability, again the storage, the handling, the pollution, and so on and so forth. Now, what is fuel? We have been talking about fuel since so long. Now, let us define fuel. Fuel is nothing but a combustible substance that combines with atmospheric oxygen with the evolution of large amount of heat
which can be used for practical purpose. Practical purpose means heating, right? Running a vehicle, so on and so forth, or converting water into steam. We can again define, or we can give another definition to the fuel, that any combustible material which has been obtained in bulk, which contain carbon as a major constituent, and burns in the presence of oxidant. What do you mean by oxidant? Oxidant is nothing but which has or which supplies oxygen, and we are very well aware that fuel combustion only takes place in presence of oxygen, right? And when you use oxygen, it evolves heat, which can be used economically in domestic as well as in industrial purposes, or for the purpose for generation of power. So when we talk about combustion, so combustion is of two types: complete combustion and incomplete combustion. What do you mean by complete combustion? Because I'm using the word combustion here. You can see the word combustible material. That means which undergoes combustion, right? So combustion is of two types: complete combustion and incomplete combustion. So what is complete combustion? Complete combustion means when a material burns completely in presence of oxygen, resulting in formation of only carbon dioxide and water. That is termed as complete combustion, right? So we have excess amount of oxygen for complete combustion. But whereas for incomplete combustion, the amount of oxygen is available is less. So less amount of oxygen results in the formation of carbon monoxide, which is nothing but an example for incomplete combustion. Now let us talk about the types of fuel. So as per your knowledge, you must have studied the types of fuel as solid, liquid and gaseous. Now let us add one more topic to this. The fuels have been classified into two types. The first is on the basis of its study one by one in detail, right? I hope you are understanding what I am being teaching. If yes, please type in chat box. Are you able to get what I am being teaching? Are you there, students? Are you there, students? Yes? Yes, Amisha, are you able to hear? Understand? You're saying yes. Zakaria saying yes. Lakshmi saying yes. Okay. So all of you 71 are there with me. That's very good, Eman. Okay, okay. Thank you so much. Now let us continue. If you have any problem, any query, any doubt, you may put the query or doubt in chat box. I'll be glad to answer you, dear students. Okay, let us continue. So fuels have been classified, as I told you, on the basis of its occurrence and on the basis of its states and aggregation. Regarding the notes and all, as I'm a faculty for section A right now, but due to this pandemic and all, we have been clubbing two sections, right? So I'm been taking care of section A and C. So you just wait for some days, no? At least 10 more days. So all the notes, printed notes, will be given to you from my side, to my section. And if section C wants, they can also take the notes of mine. Okay, fine. So don't you worry. Everything will be provided to you. Okay. So chill and let us continue with the types of fuel. Dear students, this is an online mode. So I know it is difficult because it's a one-way traffic. You must be facing certain issues, right? But what can we do? We are just wanting to cover up your syllabus as much as we can. And since this is our first class, so I've been going a bit slow so that you get acquainted with my pronunciation, with my way of teaching. From the second class, the things will be in a very faster rate. Okay. So don't you worry. We are going to cover majority, or you can say all the 6 units. Don't you worry. We'll take care of it. Now, coming back to the types of fuel.
Again, repeating the point on the basis of its occurrence and on the basis of its state or aggregation. So let's see on the basis of its occurrence. On the basis of its occurrence, it is either classified as natural or primary, which has been basically obtained from nature. Okay? And the example is wood, coal, and peat. You can say lignite also, anthracite, bituminous, subbituminous, so on and so forth. Okay. Second is since this is natural or primary, so the दूसरा वाला कौन सा रहेगा आर्टिफिशियल और सेकेंडरी प्राइमरी हो गया है तो दूसरा कौन सा आएगा सेकेंडरी आएगा नेचुरल है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा आर्टिफिशियल होगा दैट मीन्स द थिंग्स विच इज बीन ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी फ्यूल अच्छा नेचुरल फ्यूल में हम एग्जाम्पल और एक ले सकते हैं दैट इज क्रूड पेट्रोलियम ऑयल ठीक है इट इज देयर इन द नेचर ओके सो वी कैन टेक द एग्जाम्पल फॉर आर्टिफिशियल एज पेट्रोल डीजल एंड केरोसिन जो नेचर में हमको क्रूड पेट्रोलियम ऑयल मिलता है दैट इज viscous dark color and it is of no use it has to be sent for fractional distillation and then we obtain what petrol diesel and kerosene so natural और प्राइमरी मतलब जो नेचर में बहुत आसानी से आपको मिल जाता है नेचर में है उसको हम बोलेंगे नेचुरल फ्यूल और आर्टिफिशियल और सेकेंडरी फ्यूल हम किसको बोलेंगे जो हम प्राइमरी फ्यूल से निकालते हैं कोई ना कोई तरीके से जैसे हम कोक बोल सकते हैं ठीक है चारकोल बोल सकते हैं बिकॉज वो या तो लकड़ी से बनाया जाता है या तो कोल से बनाया जाता है ओके अग्री तो इज दिस क्लियर यस शैल आई प्रोसीड फर्दर प्रोसीडिंग फर्दर second type of classification is on the basis of state or aggregation state मतलब क्या होता है solid liquid and gaseous state okay yes और aggregation मतलब aggregation का मतलब होता है कि किस तरह से मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ओके दैट इज नोन एज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट और एग्रीगेशन ये हमें पता है बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं सॉलिड फ्यूल लिक्विड फ्यूल एंड गैसियस फ्यूल यस सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल सॉलिड फ्यूल का एग्जाम्पल हमने दे दिया है कोल बहुत पार्टिकल्स एकदम पास पास जुड़े हुए हैं लिक्विड फ्यूल में पार्टिकल्स थोड़े से दूर दूर घूम रहे हैं एग्जाम्पल हमने दे दिया पेट्रोल गैसियस फ्यूल में मैंने यहाँ एलपीजी दिया है एक्चुअली इट इज एन एग्जाम्पल फॉर लिक्विड फ्यूल बट सिंस हम उसको गैस करके बोलते हैं इसलिए मैंने उसको गैसियस फ्यूल का एग्जाम्पल दिया है आप कोई भी गैस ले सकते हो मीथेन गैस ले सकते हो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैसियस फ्यूल क्लियर Now let us do the summary of all the fuels. अभी हमने क्या बताया था आपको मैं आपको दो क्लासिफिकेशन दिया था क्लासिफिकेशन ऑन द basis of state. अब हम क्या कर रहे हैं we are clubbing both the classification like this. So this is a summary of both the classification. Can you see types of fuel? Solid, liquid and gaseous. It is on the basis of its state. Can you see natural or primary? On the basis of their occurrence. Okay, so हमने दोनों को यहाँ लगा दिया है और हम उसके हिसाब से हम अभी अपने फ्यूल्स को क्लासिफाई करेंगे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं जैसे कि हम बोलेंगे सॉलिड नेचुरल फ्यूल एग्जाम्पल इज वुड पीट कोल लिग्नाइट काउ डंग शैल आई रिपीट वंस अगेन हमने दो तरह के क्लासिफिकेशन पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एग्रीगेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स अक्रेंस तो ये एग्रीगेशन हो गए सारे और ये क्या हो गया उसके अक्रेंस हो गए ठीक है अच्छा अभी हम क्या कर रहे हैं हम दोनों को मिला के पढ़ रहे हैं वी आर कंबाइनिंग बोथ द क्लासिफिकेशन टुगेदर एंड जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेदर एवरीथिंग कम्स or everything can be accumulated at one place yes it can accumulate solid देखिए आप देखिए हम आपको बताते हैं solid natural fuel या solid primary fuel example क्या है wood peat coal lignite and cow dung okay solid artificial or secondary which has been obtained from the primary one example क्या है coke charcoal and petroleum ठीक है पेट्रोलियम कोक ये हम पढ़ेंगे अभी सेकेंड यूनिट जब हम पढ़ेंगे ना तो लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल में वी विल स्टडी अबाउट द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इन दैट आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ पेट्रोलियम कोक ओके नेक्स्ट इज लिक्विड प्राइमरी और प्राइमरी लिक्विड फ्यूल it is nothing but crude petroleum oil okay
Secondary liquid fuel, tar, kerosene, diesel, petrol, LPG. I'm using again the word here. Please don't get confused. It is basically liquefied petroleum, gas. At a temperature, at a pressure, it is being in liquid. But when you release the pressure, it becomes gas. Okay. Next is gaseous fuel. That is primary gaseous fuel, natural gas. That is methane. Okay. Next is secondary gaseous fuel, coal gas, water gas, biogas, coke oven gas. Am I clear? I'm just waiting for 5-10 seconds. Just revise the summary and let us then continue further. Okay, proceeding further. Now, when we talk about fuel, we need to talk about its calorific value. एक फ्यूल को हम अच्छा कब बोलते हैं? जब उसकी हमको कैलोरीफिक वैल्यू पता रहे या उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज्यादा रहे, राइट? अच्छा, जब हम कुछ भी खाना खाते हैं तो व्हाट वी थिंक और व्हाट वी टॉक अबाउट, अरे बर्गर पिज्जा नहीं खाना, उससे कैलोरीज बढ़ेगी मतलब व्हाट? इट हैज द एबिलिटी टू गिव मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी. ओके, फाइन. Value has been associated with fuels as well as with food also. So let us go with the word calorific value now. Let us define the calorific value. The calorific value or the heating value of a fuel is the amount of heat which is being released during the complete combustion of unit mass of fuel. The word ध्यान रखिए, it is the amount, total amount of heat which is being released during complete combustion of unit mass. Unit मतलब एक, 1 unit, 1 gram, 1 kilogram, 1 quintal, anything. मास ऑफ फ्यूल. वाई वी आर टेकिंग यूनिट मास? यूनिट मास लेने से क्या होता है, अगर हम कोई भी चीज का एक का पता करते हैं, एक की वैल्यू पता करते हैं, तो हम मल्टीपल निकाल सकते हैं उसका, ठीक? अगर मुझे पता है कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज 2 रुपीज, तो आई कैन फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 1000 पेंसिल्स और यू कैन से 784 पेंसिल्स. The calculation becomes very easy and clear. Okay, and before this I have told you the word complete combustion. सो कैलोरीफिक वैल्यू किसके साथ एसोसिएटेड यहाँ पर? द वर्ड कंप्लीट कंबशन. कंबशन अगर कंप्लीट नहीं होगा तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या रहेगी? कम रहेगी या गलत आएगी, तो हम बता नहीं पाएंगे कि whether the fuel is good or bad. So in other words, if a fuel is having very higher calorific value or good calorific value, it means that the amount of heat released is very high. Clear? You can say, okay, this is the characteristic property of a fuel, and it is being measured in units of heat per unit mass of gram, kilocalories per kg. Okay, fine. अब कैलोरीफिक वैल्यू समझ में आ गया है, हमें ये भी पता चल गया कि ये बहुत मेजर या इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है किसका? फ्यूल का. बिना कैलोरीफिक वैल्यू के हम बात ही नहीं करेंगे. हमको पहले देखना है, अगर मैंने कोई फ्यूल को अच्छा फ्यूल बोला है तो क्यों बोला है? बिकॉज उसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी है. अगर मैं किसी फ्यूल को बोल रही हूँ कि नहीं ये फ्यूल अच्छा नहीं है, तो क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि उसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी नहीं है, ठीक है? तो इट इज द मेजर और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूल. और उसका मेजरमेंट भी हमने आपको बता दिया है. इट इज बेसिकली बीइंग मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हीट पर यूनिट मास, यानी कि per gram, per kilogram, per quintal, anything. Let us move further ahead. So एक नई चीज पढ़ेंगे अब आप आज, वो है यूनिट्स टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू. कौन कौन से टाइप्स ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू है? पहला है हाई और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, HCV और GCV. ठीक है, हाई जहां लिखा है मतलब HCV. Okay, CV is for calorific value. ग्रॉस यानी कि GCV, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू. और सेकंड वाला है नेट कैलोरीफिक वैल्यू, दैट इज लोअर और नेट कैलोरीफिक वैल्यू. एप्लीकेशन हम यहाँ यूज करेंगे LCV और NCV. याद रखेंगे HCV और GCV एक ही चीज है. उसके बाद है LCV और NCV, ये भी एक ही है. फाइन, अलग अलग एब्रिवेशन दिए हैं लेकिन मीनिंग सेम ही रहेंगे. Let us proceed further with higher gross calorific value.
बैकड्रॉप में आपने याद रखना है कि हमारे पास जो फ्यूल है उसमें है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। हमें ये याद रखना है पहले बैकड्रॉप में। ठीक है, फ्यूल के अंदर ये चीजें रहती ही हैं। जितना ज्यादा कार्बन रहेगा उतनी ज्यादा उसकी कैलोरीफिक वैल्यू रहेगी। क्यों कैलोरीफिक वैल्यू रहेगी? बिकॉज कार्बन ऑन कंबशन प्रोड्यूसेस हीट विच इज बीन नथिंग बट एनर्जी। जब हम उसका काम करेंगे उससे हम इस्तेमाल करेंगे किसी वर्क डन के लिए। वाटर अगर रहेगा, दैट इज हाइड्रोजन अगर रहेगा, इफ इट अंडरगोज कंबशन इट विल प्रोड्यूस वाटर, पानी बनाएगा। हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस व्हाट? वाटर। तो पानी बनना है यानी कि व्हाट इज, वो तो हीट लेके भाग जाएगा, बराबर है। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या था हमारे लिए? कार्बन इंपॉर्टेंट था। बाद में आया कौन? हाइड्रोजन। कार्बन जल गया, एनर्जी दे दिया। हाइड्रोजन जला, पानी बना, लेकिन वो एनर्जी लेके भाग गया। ऑक्सीजन जलता नहीं है जबकि वो जलने में मदद करता है, इसलिए ऑक्सीजन को हम गिनेंगे नहीं। बारी आई नाइट्रोजन एंड सल्फर की। नाइट्रोजन जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे जलता नहीं है, इट डज नॉट अंडरगो कंबशन, इट रिक्वायर्स वेरी यू कैन से different kind of temperature and pressure so that it undergoes combustion. So नाइट्रोजन जलेगा नहीं तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा। फिर चला गया नाइट्रोजन, कौन बचा? सल्फर। सल्फर जलता है, it undergoes combustion, it oxidizes and it forms sulfur dioxide. पर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ये क्या है? हार्मफुल है किसके लिए? मेटल के लिए, बिकॉज इट इज गोइंग टू कॉज पोल्यूशन। Oxides of nitrogen बनेंगे, oxides of sulfur बनेंगे, it will cause pollution and it may also corrode the area in where the combustion is being taking place. So ultimately एक ही conclusion अभी यहाँ निकलता है कि हमारे पास जो भी फ्यूल रहे उस फ्यूल में हमारे पास कार्बन कंटेंट जो रहेंगे वो ज्यादा रहने चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट रहेगा उतनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू रहेगी। तो ये आप अपने बैकड्रॉप माइंड में बना के रखेंगे, और जब भी हम बात करेंगे कैलोरीफिक वैल्यू में तो एट द बैक ऑफ योर माइंड ये सब चलते रहना चाहिए। ओके, प्रोसीडिंग फर्दर विद ग्रॉस और हायर कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं जीसीवी और एचसीवी। Let us define what is GCV. It is the total amount of heat liberated by the complete combustion of unit mass of fuel. At room temperature. समझा? Right? That means अगर हमारे पास टेम्परेचर है 15, फॉर एग्जाम्पल, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, देखिए आप। It is the total amount of heat liberated by the complete combustion of unit mass of fuel and the product of combustion are allowed to cool at room temperature. समझा? कैलोरीफिक वैल्यू की ही डेफिनेशन है यहाँ पर, बट इसमें हमने एक नई चीज़ और ऐड कर लिया। और वो नई चीज़ हमने क्या ऐड किया है? हमने वो ये बोला है कि जो बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे जलने के बाद, फ्यूल के कंबशन होने के बाद जो बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे, कौन कौन से बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे? कार्बन जलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन जलेगा तो H2O बनाएगा, ठीक है, सल्फर जलेगा तो SO2 बनाएगा, नाइट्रोजन जलता नहीं है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, इसी जैसा N था वैसे N2 बाहर निकल जाएगा। यस, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्ट्स बाहर निकलेंगे, नो डाउट दे विल बी कैरिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट विद देम। जैसे वाटर है वो भी हीट लेके भागेगा। हमें क्या करना है कि जो भी बाय प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं गैसियस फॉर्म में या वाटर वेपर फॉर्म में, उनको कूल करना है रूम टेम्परेचर पे, यानी कि यू नीड टू कंडेंस देम। अब जब हम कंडेंस करेंगे तो उसमें से थोड़ी बहुत एनर्जी निकलेगी, बराबर है। वो एनर्जी को भी हमको यहाँ ऐड करना है, तो टोटल कौन सी हो जाएगी? वो ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या हायर कैलोरीफिक वैल्यू। समझा? ठीक है। सो व्हेन अ फ्यूल कंटेनिंग हाइड्रोजन इज बीइंग बर्न, द हाइड्रोजन इज गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम। ये हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया था। समझ में आया? मैं आपको एक और चीज देके समझाना चाहूंगी। व्हेन आई से माय gross salary is 50,000, but my net salary is 45,000। मतलब क्या हुआ? ग्रॉस मतलब ओवरऑल सैलरी, बराबर, पूरा हर चीज मिला के पूरा। और नेट मतलब क्या होता है? कुछ काटने के बाद हम जो देते हैं उसको बोलते हैं नेट। अग्रीड? तो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, which this means that कि if you burn the you can say fuel, so whatever energy which is being obtained, that is calculated, and the byproduct which was been running away,
is being now cooled at room temperature. So after cooling, certain amount of energy is also been obtained. So both the energies, when they combine together, they give rise to gross calorific value or higher calorific value. Clear? Okay. So as the product of combustion have been cooled at room temperature, the steam get condensed into water and latent heat is being evolved. Latent heat का मतलब क्या होता है? छुपी हुई, जैसे कि भाप बन के गया है. वाटर, हाइड्रोजन जब बर्न हुआ तो वाटर बनाया, वाटर पार्टिकल्स बने छोटे छोटे से, राइट राइट, मॉलिक्यूल्स बने हैं छोटे छोटे से. तो वो क्या करेंगे? एनर्जी लेके एकदम से एस्केप हो जाएंगे. हमने क्या किया? जो भाग रहा था उन सबको पकड़ के रखा, ठंडा कर लिया. जब ठंडा करेंगे तो थोड़ी बहुत एनर्जी तो हमको मिलेगी. वो एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट, राइट. सो लेटेंट हीट इज बीन एडेड here into gross calorific value. Thus, the latent heat of condensation of steam, so liberated, is being included in GCV. I hope this word GCV is being clear to you. If it is clear, please type yes in the chat box. Are you there with me, students? No, I suppose everyone has ran away. Ashar is with me. Mr. Faruqi is with me. Okay, so many are with me, right? Chalo, I hope this concept is clear to you. So I've been proceeding in. Okay, okay. Am I clear? I'm clear. Gross calorific. शोएब समझ में आया कि gross calorific value? शोएब खान. Gross calorific value समझा? शोएब ने कहा yes मैम समझ में आ गया. There is a question, what is burning temperature? Burning temperature is nothing but it is the temperature at which the compound or the substance starts burning or it catches fire. That is basically burning temperature. And burning temperature is different for different substances. Burning temperature is also being termed as ignition temperature. Okay, so shall we proceed? Okay, fine. Okay, proceeding further, let us go with LCV or NCV, that is net calorific value or lower calorific value. क्या है नेट कैलोरिफिक वैल्यू? देखिए, जीसीवी में हमने क्या किया था? जीसीवी में हमने जो भी बाय प्रोडक्ट्स थे उन सबको पकड़ के ठंडा कर लिया था, उसमें से भी एनर्जी निकाल के रख लिया था. ठीक है, फाइन. जीसीवी. नेट में हम क्या करेंगे? जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनको भागने देंगे, निकलने देंगे, जाने देंगे, और जो चलने के बाद जो मेन हमारे पास कैलोरिफिक वैल्यू आ रही है उसी को हम काउंट करेंगे. जैसे मैंने अभी आपको बताया, मेरी सैलरी 50,000 थी, दैट वाज क्या? ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू. बट मुझे कितनी मिली? 45,000. तो नेट कैलोरिफिक वैल्यू 5,000 रुपये कहाँ गए? कोई कुछ प्रीमियम कटा या कोई और चीज डिडक्शन था, टैक्स डिडक्शन था. यस, सो I forgot about that 5,000. What I have is 45,000. So net calorific value का मतलब होता है कि whatever calorific value which has been there with the fuel, and we are not been counting about the byproduct which is being formed here. Let's see what is net calorific value. It is the net heat produced when a unit quantity of fuel is completely burnt and the product of combustions are allowed to escape. समझा? And the product of combustion are allowed to escape. पकड़ना नहीं है किसी को. जितने भी बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे, CO2 बनेगा, H2O बनेगा, SO2 बनेगा, N2 भी रहेगा. हमको क्या करना है? उन सबको जाने देना है. ठीक है? So whatever left is nothing but what? Nothing but the calorific value. Okay? वो जो बचा कुचा रहा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे net or lower calorific value. Yes, I got a question. Ignition point. It is not ignition point. It's ignition temperature basically. Sonu stuck. Ignition point is nothing but ignition temperature. We'll study later if it is there in the syllabus, because the syllabus is new to us as well. So we are just been proceeding one by one. Okay. So just take the example of H2. What happens when
hydrogen is being burned. So let us compare the net calorific value and the gross calorific value. Can you see here hydrogen? H2 plus half O2 gives H2O. This is a balanced chemical equation, right? No balance here. So I can say that 2 grams of hydrogen when combines with 16 grams of oxygen, it results in the formation of 18 grams of water. Agreed? Yes. So because 2, 16, 18, it comes in the table of 2. I'm being just simplifying the things. I'm saying 1 gram of hydrogen reacts with 8 grams of oxygen. It results in the formation of 9 grams of water. अग्रीड ये समझ में आया ठीक है तो हमने अभी ये देखना है कि व्हाट इज नेट कैलोरीफिक वैल्यू नेट कैलोरीफिक वैल्यू इज नथिंग बट ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू माइनस लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम देखिए भाई लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि we have assumed that the fuel contains carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. कार्बन मेजर है जो हमको कैलोरीफिक वैल्यू देता है हाइड्रोजन जलता है कंबशन होता है उसका लेकिन वो वाटर बनता है एंड इट हैज द हैबिट ऑफ टेकिंग हीट एंड रनिंग अवे तो हमने क्या किया था उसको कंडेंस कर लिया था ठीक है तो उसमें से भी हीट निकाल लिया था सो दैट लेटेंट हीट दैट इज द हिडन हीट इज नथिंग बट द लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन सो स्टीम को हमने क्या किया कंडेंस किया इसलिए वहां पर क्या आ रहा है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम तो नेट कैलोरीफिक वैल्यू इज ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू माइनस लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम हम इसको हम क्या करेंगे लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ स्टीम को हमने थोड़ा सा और एलॉबरेट कर लिया है तो एनसीवी इज इक्वल्स टू जीसीवी माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन पर यूनिट वेट ऑफ फ्यूल बर्न कितना बर्न हुआ था कितना हाइड्रोजन था वो इंटू 9 ये 9 कहाँ से आया फ्रॉम दिस इक्वेशन इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर देखो भाई जितना वेपोराइजेशन को लग रहा है उतना ही क्या लगेगा कंडेंसेशन को लगेगा लेकिन हमको किसको कंपेयर करना है कि वो यूनिट मास वेट में कितना हाइड्रोजन था ठीक है एंड विद स्टैंडर्ड इक्वेशन वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस सो नाउ द इक्वेशन बिकम्स व्हाट अभी इक्वेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा वो क्या होगा देखो हम आपको बताते हैं नाउ दिस इक्वेशन becomes this NCV is equals to GCV minus 9 into H. H is what? The percentage of hydrogen present. अब percentage का sign हमने हटाया था तो हमने उसको क्या किया divided by 100 multiplied by 587. तो 587 is the fixed latent heat of steam. ये दिया हुआ है. It can be calories per gram or kilocalories per kg. Clear? आया समझ में? Yes or no? In other words, we can say इसको थोड़ा सा और simplify कर लिया हमने 9 को divide कर लिया 100 से तो it became 0.09 into H into 587. Clear? Yes or no? So what is H? H is nothing but the percentage of fuel, hydrogen fuel. ठीक है? Any doubt? Any question? Is it clear? Yes, Rihant. Is it clear? Usher. Okay, Navid is saying yes, it's clear to you. Shall I proceed further? Okay, proceeding further. Now we have talked about what we have talked about was nothing but the calorific value of fuel. And we have studied about two types of calorific values, gross calorific value and net calorific value. Okay, fine. So let us go with the units of heat now. बहुत सारे यूनिट्स ऑफ हीट है जो हमको हमारे सिलेबस में दिए हैं एट प्रेजेंट हमको वही सब पढ़ने हैं फर्स्ट इज कैलोरी दैट इज कैल और ग्राम कैलोरी और जी कैल किलो कैलोरीज के कैल BTU British thermal unit CHU that is centigrade heat unit ठीक है तो 4 यूनिट्स ऑफ हीट है हमको वो करने हैं वेरी इंपॉर्टेंट 2 marks का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में रहेगा लेट अस गो विद द कैलोरीज और ग्राम कैलोरी It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. Keyword है पूरा सेंटेंस हर जगह सेम टू सेम रहेगा
अब आपको सिर्फ कीवर्ड्स पकड़ने हैं यहाँ पर। कैलोरीज, 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, right? 1 gram of water through 1 degree Celsius, that is calories or gram per calorie. So we know 1 calorie is 4.185 joules, which is equal to 4.185 into 10 to the power 7. Printing mistake है, typo mistake है, 10 to the power 7 ergs. Okay, fine. इतना याद रखना है हमको. Please याद रखिएगा, what is calories? It is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius. Now let's go to the second one. That is kilocalories. अभी देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टेटमेंट पूरा सेम टू सेम है, बस 2 वर्ड्स आपको बदलने हैं. इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर थ्रू 1 degree Celsius. समझ में आया? देखो, इट्स वेरी इजी, बहुत इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, मजेदार है केमिस्ट्री. बस आपको वर्ड्स पकड़ने हैं और समझना है. किलो कैलोरीज. Okay, so amount of heat required to raise the temperature of 1 kg of water through 1 degree Celsius. Now let's see the relationship between 1 kilocalories is equals to 1000 calories. Simple है. आगे बढ़े. ब्रिटिश थर्मल यूनिट, फिर से कह रही हूँ, BTU बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में. आप इसका वो देखिए, स्टेटमेंट देखिए फिर से में. इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 pound, 1 lb, 1 pound ऑफ वाटर थ्रू 1 degree Fahrenheit. देखो, पूरा स्टेटमेंट सेम है, याद करने का नहीं, अभी याद हो जाता है. 1 pound थ्रू 1 degree Fahrenheit. ओके, सो ये कन्वर्जन दिया है. 1 BTU इक्वल्स टू 252 कैलोरीज इक्वल्स टू 1054.6 जूल equals to joules calories equals to 3.966 BTU. ठीक है, इतना करना नहीं है हमको, इतना कन्वर्जन करना नहीं पड़ता, but just for sake of sharing I'm been sharing the conversion with you. Last is centigrade heat unit. फिर से वही है, सारा डेफिनेशन सेम है, बस यहाँ एक ही चीज का फर्क पड़ेगा. इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 pound of water through 1 degree Celsius. ये वाला जो कन्वर्जन है, इंटर कन्वर्जन, ये स्टेटमेंट आप याद रखेंगे. बाकी का आप याद ना भी रखे तो भी चलेगा. यूजुअली क्वेश्चन आते नहीं है कन्वर्जन में, लेकिन स्टिल यू शुड नो इट. Just revise, let us revise all the things again. कैलोरीज एक बार फिर से हम पढ़ लेते. 4 यूनिट पढ़ा, यही पढ़ी हम रिवाइज करेंगे. कैलोरीज पर ग्राम और ग्राम्स पर कैलोरी, किलो कैलोरीज, BTU एंड CHU. क्या था? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 gram ऑफ वाटर थ्रू 1 degree Celsius. Kilocalories, amount of heat energy required to raise the temperature of 1 kilogram of water through 1 degree Celsius. BTU क्या है? Amount of heat energy required to raise the temperature of 1 pound by 1 degree Fahrenheit. Centigrade का क्या है? Amount of heat energy required to raise the temperature of 1 pound of water through 1 degree Celsius. ठीक है, नाम देखो, सेंटीग्रेड हीट यूनिट. पाउंड के साथ किसको करना है? सेंटीग्रेड को. यहाँ क्या करना है? पाउंड को किसके साथ करना है? फॉर डिग्री फ़ारेनहाइट को. यहाँ केजी को डिग्री सेल्सियस, ग्राम्स को डिग्री सेल्सियस के साथ. तो थिंग्स बिकम्स वेरी इजी. नम्रा फारूकी सेज की आवाज नहीं आ रही. Yes, dear students, are you able to hear me? Yes, if you can hear my voice, if you can hear me, please write. Yes, ma'am, we can hear you. Namra, I'm trying. I hope net connectivity का कोई issue ना हो. I'm doing the best. My students, they can hear me. Namra, I suppose the problem is with your net connectivity. All my students are saying yes, they can hear me loud and clear. Anyways, so we have completed with the units of heat, right? So बता दिया मैंने सारा. आज का हमको इतना ही पढ़ना था, dear students. She's before winding up the topic here.
let us reach makeup. Yes, ma'am, we can hear you now. And वॉइस ब्रेक हो रही कभी कभी मैम. अच्छा आदित्य, वॉइस ब्रेक हो रही है तो देखती हूँ. लेट मी सी. होपफुली फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वॉइस ब्रेक नहीं होगी. आई विल बी हैविंग अभी थोड़ा सा we'll try to sort it out. Calories per gram or kilocalories per kg or BTU per pound. Okay. For gaseous fuel, it should be kilocalories per cubic meter or BTU per cubic feet. Okay. So we have finished the introductory part today. We have studied about the classification of fuel on the basis of its occurrence, on the basis of its state. We have studied about the calorific value.